Honorable Prime Minister, to the leaders of all political parties for the smooth functioning of the budget session. This budget session has been very productive. It has already been announced by both Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. One important milestone we have achieved is yesterday in Rajya Sabha, we created a new record. The earlier record was in 1981 when the Parliament discussed on Essential Services Maintenance Act. So when the ESMA bill was discussed and passed and became an act, it took 15 hours and 51 minutes. And yesterday in Rajya Sabha, it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes of discussion. So this is a 2 minutes. 17 hours and 2 minutes. So a record, a history has been created. And for any circumstances, this record to be broken seems to be extremely difficult, because to run the House consecutively for 2 days, from 11 a.m. on 3rd to 4:2 a.m. in the morning of the next day, 4th. It's a record which is because of the support contribution of all the honorable members, and not a single disruption during the discussion for the Waqf Amendment Bill. So the time taken for the discussion of Waqf Amendment Bill, both in Lok Sabha and Rajya Sabha, had gone without any adjournment, any disruption, except pleasant exchanges of sarcasm, criticism, and also suggestions. As parliamentary norms go, we accept all kind of criticism as well as clarifications, and sometimes political banters, it happens. So overall, to create such a milestone requires the contributions, the patience, and the deliberations of the honorable members. So for that, I would like to thank all the honorable members of Lok Sabha and Rajya Sabha. About the business, I need not elaborate. This is only Rajya Sabha, because Lok Sabha is 13 hours plus. Lok Sabha, as far as I remember, it once sat till 4 p.m. past. And Raghuvan Babu was... No, that was not a bill. That was the railway budget. There's the one discussion of the railway budget. That is a railway discussion. So, in Lok Sabha, we had discussed on the demands for grants related to the Ministry of Railways, Jal Shakti, Agriculture and Farmers Welfare. And in Rajya Sabha, we discussed the working of the Ministries of Education, Railways, Health and Family Welfare, and Ministry of Home Affairs. So we had a very productive session, and all the floor leaders had extended pleasantries with the Honorable Chairman and Speaker at the end of the day. And from this press briefing, I would like to also thank both the Honorable Chairman and the Speaker, and also all the political leaders, especially the floor leaders and the members. If you have any clarification to say, you can ask. And Shobna from the Bureau, I just wanted to ask, what was the urgency to discuss the resolution on Manipur in the wee hours in both houses? Couldn't it wait for few hours, and you could have taken it up today morning with a fresh... Well, actually, we did not brief earlier, so you are not aware of the background. When the presidential proclamation takes place, there's a mandatory that within 2 months it has to be ratified by both the houses of the parliament. And when we set for the Business Advisory Committee, it was decided
that the statutory regulations and the important government businesses would not be taken up on weekend or on the holidays. Initially, there was a discussion that we could run house on Saturday also, because we had sacrificed one day for Holi, a day before Holi. And then there was a request that the statutory legislation should not be taken up on the weekend. And today being Friday, and mandatory requirement for ratification in the parliament is well understood. So it was naturally listed right after the WAF amendment bill. सर मनोरंजन राष्ट्रीय फ्रॉम एमजीबी राज्यसभा में सरकार के पक्ष में भी ज्यादा वोट पड़े और विपक्ष में भी, तो क्या क्रॉस वोटिंग हुई है और उसका कोई डिटेल्स है क्या? लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हम तो जितना अपेक्षित थे उतने ही मिले। राज्यसभा में तो लगभग दोनों लाइन बराबर ही रहा। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्शियंस पे छोड़ा कि मेंबर्स अपने कॉन्शियंस से वोट देंगे, उनके ऊपर में कोई विप लागू नहीं होगा, तो उनके पार्टी ने हमको सपोर्ट किए हैं। अंतरात्मा की आवाज। हाँ, अंतरात्मा तो पहले भी हुए हैं, एक बार राष्ट्रपति जी का चुनाव में। तो इसलिए अपने अपने पार्टी लाइन में ही वोट हुए हैं और जो आउटकम है उससे हम संतुष्ट हैं। सर, आपको 7 वोट अतिरिक्त मिले हैं राज्यसभा में। हाँ। तो क्या ये माना जाए कि कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई या कुछ? नहीं, अंतरात्मा वाला विषय उसमें है। अंतरात्मा कुछ पार्टी ने संसद सदस्यों के अंतरात्मा पर छोड़ा, उनके कॉन्शियंस पे छोड़ा कि अपने विवेक से आप वोट करें, वो वोट हमको मिले। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग विप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वो अमेंडमेंट बिल को, लेकिन पार्टी का दबाव था या विप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। अदरवाइज वक्फ अमेंडमेंट बिल को सब लोग सपोर्ट किए हैं। कई विपक्ष के एमपी हमको आके कहा है कि निजी तौर पर सपोर्ट करते हैं, अच्छा बिल है। पारित हो चुका है, लेकिन इस तरह के बयान आए विरोधी दलों की तरफ से कि वो कोर्ट में जाएंगे, तो ये प्रवृत्तियां जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल हमने देखे हैं बीते दशकों में, उसको कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश हुई है, जबकि हालांकि अधिकांश बार कोर्ट ने सही ठहराया। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? आज भी बयान दिया कांग्रेस ने। देखिए, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। जब कानून को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उसमें सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको लोग चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। हमारे देश में 3 स्तंभ तो बना हुआ है। सरकार का काम एग्जीक्यूट करना, पार्लियामेंट का काम कानून बनाना, दिशा तय करना, कोर्ट का काम निगरानी रखना कि अच्छा से चले, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं हो रहा है, नियम नीति सब कोर्ट का काम है। अपना अपना काम बटा हुआ है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी उनका एक बयान था, आज लोकसभा में उठा भी, लोकसभा अध्यक्ष ने वो देखिए, सोनिया गांधी जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हम लोग निजी तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक बयान था कि कल पार्लियामेंट में कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक के दौरान एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ये जो बिल है वो ज़बरदस्ती पास किया गया, बुलडोज किया है। तो मैंने सिर्फ उसको प्रतिक्रिया या क्लैरिफिकेशन दिया, इतना मेहनत करके रात देर रात तक बैठ करके नियम नीति पालन करके पारित होने के बाद भी अगर कहता है कि नियम पालन नहीं हुआ 3 बार डिवीजन और बुलडोज किया, तो सही नहीं। और डिवीजन हुआ और अमेंडमेंट संशोधन रिकॉर्ड मूव किया, आप सब सुन रहे थे। तो इतना नियम नीति पालन करके अमेंडमेंट एक्सेप्ट करके नियम के तहत जब बिल पारित हुआ, तो ज़बरदस्ती का सवाल कब होता है? ज़बरदस्ती तब होता है जब डिस्कशन होने नहीं देंगे, अमेंडमेंट मूव करने नहीं देंगे। ज़बरदस्ती अगर बिल पास करता है तब आप कह सकते हैं कि बिल को बुलडोज किया गया है। यहाँ तो रिकॉर्ड क्रिएट किया, मैंने आपको बता दिया। इतना चर्चा आज तक हुआ ही नहीं
संसदीय इतिहास में। शाबाशी देना चाहिए सब मेंबर को, इतना समय दे करके हमने बिल पे चर्चा किया और पारित किया। बिल का वक्त अमेंडमेंट बिल का आप देखिए ना टाइम, आप ये 11 बजे से हाउस शुरू होते हैं, वक्त टेकअप किया 1 o'clock, आप हिसाब लगाइए। 1 to 2:40 हाँ नहीं वो हिसाब क्या भी राज्यसभा में अनाउंस किया ना। नहीं लोकसभा का ठीक है, नहीं वो अब टाइम सबको मालूम है कितना बजे शुरू हुआ और कितना बजे खत्म होता है। हाँ वही है, वही तो बता रहा हूँ, 11 बजे से सुबह 4 कितना 10 4 बज के 2 मिनट। 4 बज के 2 मिनट। विवाद भी आया कि विरोधी दलों का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष से मिला के उनके नेता को बोलने नहीं दिया जाता। नहीं बोला, सब बोला। और जब हमने देखा बिल पे चर्चा हुई तो मतलब उनकी तरफ से कोई इच्छा नहीं है कि वो बोले। ऐसा है, वो जो बोलने नहीं दिया करके जो एलिगेशन दिया उसको तो खारिज किया ना, क्योंकि जब